Hello and welcome to daily drill number 7, where I'll be looking at two caselets from the decision making section in XAT 2020. So before we start, the crash course for XAT is live now. So in case you have missed some sessions at the beginning, what you can recording as well. So this is the entire offering. If you need any information pertinent to the course, do let me know in the comment section below. Now we'll start with the first caselet that we have. So I'll show you the case. I will show you the three questions that are there. What you have to do is you have to figure out the answers on your own. तो पहले एक बार अपने से पढ़ लेना. Tell me what the answers are after looking at all the three questions and then have a look at the solution to all the three questions that will follow. एक एक करके अगर solution देखोगे ना तो मजा नहीं आएगा and you will have something that you would have borrowed from the previous solution into the next question. तो वो कभी भी true picture नहीं देता. So make sure that you're attempting all three questions and then having a look at the solution. So this is the parent set of information that we have here for this particular set. I will show you the three questions that are there. This is question number 1. While considering GNP's offer, Rakesh pondered over the following facts. और कुछ facts दिए हुए हैं. So that is one thing that we are looking at in this particular case. The next bit is while mulling over the offer, Rakesh consulted Manikandan, his trusted senior at SPCIL. तो ये second question है, तो एक बार देख लेना. Again, this might you might want to go through this before you look at the solution. Third question is this one. Rakesh in his current job came across incidences of bribing by private sector officials. He wondered if he might have to bribe government officials while at GNP. So three questions are there. Have a look at this. Let me know in the comment section what your answers are and then have a look at the solution that will follow. So start करते हैं. Rakesh, who hailed from Dhanbad, worked in Jamshedpur with SPCIL. तो एक government construction company है SPCIL, and he worked in Jamshedpur with this company. Although HR policies concerning job security and work-life balance attracted Rakesh to SPCIL. So job security was one of the things that attracted him to SPCIL and work-life balance. ये दो चीजें थी जिसने राकेश को SPCIL में अट्रैक्ट किया था. Over time he found his work monotonous. तो पहले तो क्या हुआ था, what exactly attracted him to SPCL? First impression क्या था? Job security and work life balance, ये पहले था. But over time what happened, he found his work monotonous with no growth opportunities. उसको growth opportunities मिल नहीं रहे थे. He was not very kicked about that and his work was also monotonous. कुछ नए challenges उसको नहीं मिल रहे थे. However, the proximity to Dhanbad, so proximity to Dhanbad now becomes his important reason, enabled him to visit his parents at his convenience. तो parents से जाके मिलके आ सकते. Recently, Rakesh applied to Grow and Prosper, GNP, a multinational company engaged in construction-related operations, making inroads into many Indian states. GNP interviewed Rakesh and offered him three times his current salary at SPCL. उसको three times salary दे दिया. Current salary at SPCL is what they offer. Now let's see what exactly are the questions and let's see what happens. First one. While considering GNP's offer, Rakesh pondered over the following facts. तो पांच फैक्ट दिए हुए हमको यहाँ पे. We have to figure out which combination or which of the following combinations of the above facts will best help Rakesh decide on joining GNP. तो joining GNP अगर उसको decide करना है तो which facts facts that have been given here, those will be impactful in allowing him to make that decision. So let's see क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. First, a recent government policy made poor performance punishable by salary reduction or dismissal. अब पनिशेबल बाय सैलरी रिडक्शन और डिसमिसल, ये तो उसको जीएनपी में भी ऑफर करेगा, एसपीसीआईएल में भी ऑफर करेगा, अफेक्ट करेगा, सॉरी. सो बिकॉज ऑफ दैट ही शुड नॉट रियली डिसाइड ऑन ज्वाइनिंग जीएनपी बिकॉज जीएनपी ज्वाइन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके लाइफ में, राइट. पुअर परफॉर्मेंस पनिशेबल बाय सैलरी रिडक्शन और डिसमिसल, whichever company it is, it doesn't really matter. So one does not really help him understand whether he should be joining GNP or not. So that's why options B and C are out. The first assignment at GNP is a bridge construction project in a village near Dhanbad. So at least for the immediate future, उसका parents के पास जाके मिलके आना should not be very difficult. Now I'm not saying that it will be very easy because we don't know कि उसका workload कितना होगा, how many days will he have to work, how far is that village near Dhanbad, if it is connected or not, ये सारी चीजें हैं. But हाँ, near Dhanbad है and we have been told in the case study that he prefers SPCL या he was willing to work with SPCL in spite of not having any growth opportunities or not having any or having kind of a monotonous job. He was there because he could visit his parents whenever he felt like, right? So that was basically the thing. So two is fine, but two is again not something that will be his first concern that will be there. ठीक है, but हाँ एक combination में two आ सकता है धनबाद में, तो of course the convenience might be there of him being able to visit his parents. 3. With his current savings, Rakesh need not depend on regular income for at least 6 months.
अब उसके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है 6 मंथ्स के लिए, ही हैज बीन कवर्ड इन स्पाइट ऑफ हिज करंट इनकम एंड इन स्पाइट ऑफ हिज करंट जॉब, जीएनपी उसको क्या दे रहा है जो एसपीसीआईएल नहीं दे रहा है? जीएनपी इज बेसिकली गिविंग हिम ओनली वन थिंग दैट वी हैव बीन टोल्ड, व्हिच इज 3 times द सैलरी। अब सैलरी राकेश का बहुत ज्यादा problematic area शायद नहीं है, right? Because monotony, the job becoming monotonous, that is one thing, and the second thing is growth opportunities नहीं है, that is what was worrying him at this job, right? So यहाँ पे current savings अगर उसके हैं 6 months तक अगर वो sustain कर सकता है, then he not jump ship and join GNP immediately, right? He might want more clarity in terms of कि भाई मतलब और कोई जॉब मिल सकता है क्या, और कुछ कर सकते हैं क्या, right? So he can take a break of 6 months as well and still search for a fresh job, तो ऐसा कुछ हो सकता है। So he need not join GNP immediately. He can explore other opportunities even if it does not have a job with SPCI. तो ये वाला बहुत impactful option शायद नहीं रहेगा, and that's why D and E are out. A should be the answer. तो एक बार देख लेते हैं बाकी के दो points भी। though an exemplary performer, Rakesh has hardly been recognized at SPCL. वो तो उसका ग्राइप रहा है, मतलब उसको वहां पे रिकॉग्निशन नहीं मिला है, and they are offering 3 times the salary, so maybe he might get some recognition at SPCL. So maybe because of that he might join GNP कि यार यहाँ पे देखो मेरे को recognition तो मिला नहीं है, monotonous job है मेरा, so let me explore an opportunity there, I might get better opportunity. So 4 is still fine. It is one of his pain points, right? कि recognition नहीं मिला है। Then, based on the annual performance review at GNP, Rakesh will either earn double the salary or get fired. राइट, अब यहाँ पे एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू एट जीएनपी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में राकेश को या तो डबल द सैलरी मिलेगा या तो राकेश फायर हो जाएगा। नाउ दिस इज अगेन समथिंग दैट इज स्लाइटली कंटेंशियस इफ यू लुक एट इट, बिकॉज राकेश के पास जॉब सिक्योरिटी है, दैट वाज समथिंग दैट वाज sort of calming his nerves, right? But that happened at the beginning of his stint. That's what has been mentioned, right? Initially, he thought that job security hai, and if you look at this one, work-life balance है, because of that he attracted Rakesh to SPCI over time. Over time का मतलब है जैसे जैसे टाइम पास हुआ, राकेश के प्रायोरिटीज बेसिकली स्टार्टेड शिफ्टिंग बाय अ बिट। सो अभी उसको जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत फाइट नहीं है। ऑल्सो एक छोटा सा अंडरटोन यहाँ पे देखते हैं दैट राकेश इज सॉर्ट ऑफ लुकिंग एट ग्रोइंग एंड ही फाइंड्स हिज जॉब मोनोटोनस, सो मे बी ही वांट्स टू एक्सप्लोर समथिंग दैट विल गिव हिम that he believes he will be able to do justice to, and because of that 5 फिर भी ठीक है, चलो उसको पैसा डबल मिलेगा या तो गेट फायर्ड। But if Rakesh is anyway going to get fired if he's not good enough, then maybe he will come to know at the end of the year, right? So based on annual performance review at GNP, which is a fair process, should ideally be a fair process on paper, Rakesh will either earn double the salary or get fired. Seems to be a reasonable response. 3 does not really help him make a decision, and 1 तो definitely does not make him choose GNP. तो वहां पे वो GNP चूज करे या यहाँ पे बैठे, it does not really make a difference. So poor performance punishable by salary reduction or dismissal will not really impact him much in this particular context. So the correct answer here should be option A, 5, 4, and 2. Let's look at the next question. While mulling over the offer, Rakesh consulted Manikandan, his trusted senior at SPCIL. ठीक है, trusted senior, very important qualifier है trusted. Manikandan, who had friends in GNP, disclosed that it preferred government employees for its projects in Jharkhand, Bihar, and Chhattisgarh. Once the project is completed, GNP may not need your skills. So may not need your skills करके ऑब्जर्व किया मणिकंदन ने। अगेन मणिकंदन इज नॉट सेइंग कि नहीं तुम्हारा खराब होगा, कुछ नहीं होगा, निकल छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, जो भी, बट दे आर जस्ट सेइंग दैट ओके, मणिकंदन इज सेइंग दैट ओके, may not need your skills, तो थोड़ा बच के रहना, थोड़ा संभाल के डिसीजन ले लो, is what Manikandan is trying to say. Which of the following, if true, will best enable Rakesh to decide on the offer? During the interview, GNP quizzed if Rakesh would sustain his relationship with his former colleagues at SPCIL. अब उन्होंने पूछा कि would sustain your relationship with his former colleagues at SPCIL, ये यहाँ पे बोला गया था। अब यहाँ पे preferred government employees for its projects in झारखंड, बिहार एंड छत्तीसगढ़, ये अगर करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ, तो राकेश वुड सस्टेन हिज रिलेशनशिप विद फॉर्मर कलीग्स एट एसपीसीआई, से उसको फर्क नहीं पड़ता ना। एसपीसीआई इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग। सो इफ यू लुक एट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर, एसपीसीआई इज अ गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है, एंड जीएनपी इज अ मल्टीनेशनल कंपनी एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ऑपरेशंस। अब दे मे और मे नॉट बी इन द सेम स्पेस, राइट? तो यहाँ पे सस्टेन हिज रिलेशनशिप विद हिज फॉर्मर कलीग्स एट एसपीसीआई माइट नॉट रियली बॉदर हिम मच। तो वो नहीं बोलेंगे कि यार तुम्हारा अगर यहाँ पे ना, तो गो बैक टू योर कंपनी, इज नॉट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। सो मे बी दिस इज नॉट समथिंग दैट आई विल बी वरीड अबाउट। Through social media, Rakesh discovered that Manikandan's contact, who had left SPCL to join GNP, is no longer with GNP. अब उसका मतलब ये नहीं है ना कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो तुमको मतलब दे विल बेसिकली लेट गो ऑफ यू। ऑल्सो मणिकंदन हैज हैड फ्रेंड्स इन जीएनपी,
राइट। एंड उसने बोला था, बट मणिकंदन का कॉन्टेक्ट नीड नॉट बी दी वन हु माइट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव, अगर देखते तो, राइट। सो हु हैड लेफ्ट एसपीसीआई टू जॉइन जीएनपी, अगर जीएनपी के साथ नहीं, उसको तीसरा कोई जॉब मिल गया होगा, हाउ डज इट मैटर, राइट। सो दैट डजंट से दैट जीएनपी वुड हैव आस्क्ड हिम टू गो। वी माइट थिंक अबाउट इट दैट वे कि हाँ जीएनपी ने शायद उसको छोड़ दिया होगा, बट मेरे को कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा। दैट पर्सन माइट हैव लेफ्ट ऑन देयर ओन एज वेल। देन senior level employees at GNP who began their career in similar projects are now confined to their desk at the head office for almost a decade, तो decade तक वहां पे बैठे हुए हैं। Now senior level employees at GNP who began their career in similar projects, तो वैसे ही प्रोजेक्ट्स में जिन्होंने काम चालू किया था, they are now confined to their desk at the head office for almost a decade. Now this is basically what they are saying, may not need your skills, तो ये जस्टिफाई करता है उसको, बराबर है। सीनियर लेवल एम्प्लॉइज जो बैठे हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, उनको हेड ऑफिस में बिठा दिया है आफ्टर their projects were done, right? So this is an impactful option. This will tell Rakesh that Manikandan was, what Manikandan was saying was right, and there has been a historical precedence for this. तो थोड़ा संभल के रहना, again the same thing. D. As GNP also planned to enter two southern states, it has decided to recruit people from those states. अब southern states का राकेश का क्या लेना देना है, वो पूरे पूरे वर्ल्ड में एक्सपांड करेंगे। लेट्स से दे स्टार्ट एंटरिंग द मार्केट्स ऑफ वियतनाम, लेट्स से, एंड वहां पे अगर वो 50 लोग को हायर करते हैं, हाउ शुड दैट बॉदर राकेश? So D is not correct at all. E. Manikandan stopped both of his sons from taking a private sector jobs given his loyalty to the government. ये ना बहुत ही हिडन सा ऑप्शन है यहाँ पे, विच सम पीपल माइट ओवरथिंक एंड से कि नहीं ई आंसर हो सकता है, बिकॉज मणिकंदन जो है ना, मणिकंदन इज बेसिकली समवन हु इज लाइक कि नहीं गवर्नमेंट ही बेटर है करके, बाकी सब खराब है करके, इज व्हाट हिज थॉट प्रोसेस कम्स अक्रॉस एज। एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज टेलिंग राकेश कि नहीं नहीं तुम भी गवर्नमेंट में ही रहो, प्राइवेट कंपनी से थोड़ा बच के रहना करके। बट इट इज नॉट द केस, यू हैव टू टेक एवरीथिंग एट फेस वैल्यू, जो भी दिख रहा है वही है, उसमें मतलब और सब टेक्स्ट ढूंढने की कोशिश मत करना। सो मणिकंदन ने अपने दोनों बच्चों को बोला था प्राइवेट सेक्टर जॉब मत लो, गिवन इज लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट इज फाइन। बट मणिकंदन एंड राकेश का रिलेशनशिप इज नॉट, माइट नॉट बी द सेम हियर, राइट। सो मणिकंदन माइट एक्चुअली बी टेलिंग हिम कि नहीं मतलब ये हुआ था, एंड दिस माइट बी द केस। एक जगह पे उसका लॉयल्टी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट माइट कम इनटू द पिक्चर, बट इट डज नॉट मीन दैट एवरीवेयर इट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। So just because, let's say for example, you bought an Ayurvedic product doesn't mean that you will never buy anything from an MNC. Maybe in that context, that Ayurvedic product or the Ayurveda based product or herbal based product might be the one that you actually like, right? It actually makes sense to you. But her context में you might not be able to do that. So something like that is going on in option E. So that's why the correct answer here should be option C. The senior level employees at GNP जिन्होंने करियर सिमिलर प्रोजेक्ट में शुरू किया था, 10 साल हो गए वो डेस्क जॉब में बैठे हुए हेड ऑफिस पे, और उनको कहीं पे कुछ प्रमोशन नहीं मिल रहा। Let's look at the last question of the set. Rakesh in his current job came across incidences of bribing by private sector officials. ठीक है। So current job के अंदर private sector officials ने bribe करने के कुछ instances उसने देखे। He wondered if he might have to bribe government officials while at GNP. ठीक है। So उसको लगा कि देख ले GNP के अंदर भी bribing शायद करने बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं। He reflected on his interview with GNP. तो चार चीजें बताई गई हैं इंटरव्यू में जो हुई थी। Which of the following sequences of the above statements is the most appropriate descending order of bribing undertones? Bribing undertones का मतलब क्या है कि राकेश might be worried or might be pondering कि यहाँ पे bribes offer करना might be the norm or not. So which of the following set of options or sequences of options is the most appropriate descending order? तो सबसे ज्यादा ब्राइबिंग अंडरटोन्स कौन से ऑप्शन में है एंड सबसे कम ब्राइबिंग अंडरटोन कौन से ऑप्शन में, दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग। The interviewers were puzzled how Rakesh could manage his EMIs with his current income. Now they are implying कि भाई तुम्हारा इतना EMI है, तुम current income के साथ कैसे इसको manage कर रहे हो? ठीक है। Now if they are worried about this particular thing, they might have they might want to ask him कि भाई तुम ये करंट इनकम के बाहर जाकर और कुछ कर रहे हो क्या जिससे तुम्हारा ईएमआई आ रहा है? तो जिसमें थोड़ा सा ब्राइबिंग अंडरटोन है। इट इज नॉट वेरी एक्सप्लिसिट, बट दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है करके। तो दो चीजें हो सकती हैं। वन इज दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ आर यू मैनेजिंग योर ईएमआईस विथ योर करंट इनकम, एंड सेकंड थिंग इज ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि मतलब are you willing to take bribes or are you already doing something in the present context, तो क्या तुम्हारा सीन है थोड़ा बताओ करके, that's what they are trying to prod him। ठीक है। One has some bribing undertones, yes। Next, one interviewer was constantly probing how Rakesh managed to meet his project deadlines with little cooperation from his subordinates। तो project deadline कैसे meet किया with little cooperation from his subordinates?
तो तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स तुमको हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर सबॉर्डिनेट्स तुमको हेल्प नहीं कर रहे हैं, उसके मतलब इन इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर मीटिंग योर प्रोजेक्ट डेडलाइंस, might have some bribing undertones, that you might be bribing someone else to do something. You might be bribing someone to set a maybe later date, कि प्रोजेक्ट डेडलाइन कैसे मीट होते हैं, बट एक्सप्लिसिटली मैं नहीं बोल रहा कि भाई तुमने पैसा लेके काम क्या करके। ब्राइब इज व्हाट यू आर टेकिंग मनी टू डू समथिंग फास्टर, राइट? दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट। तो लिटिल कॉपरेशन में सबऑर्डिनेट तुमने इतना फास्ट कैसे प्रोजेक्ट डेडलाइन मीट किया करके, ठीक है। सो अगेन दिस इज अ क्वेश्चनेबल बिट, अगेन पूरा पूरा ब्राइबिंग अंडरटोन नहीं है, बट सम व्हाट यू कैन से है। What would you do if your project has a fortnight's deadline and it takes a month to obtain a permit? Ask another interview. Now this makes sense, right? 15 days का तो तुम्हारा डेडलाइन है और तुमको कंप्लीट करने में 1 महीना लगेगा, तो व्हाट विल यू डू? राइट, 1 मंथ टू ऑब्टेन अ परमिट एंड 15 डेज में तुम्हारा खत्म करना है प्रोजेक्ट। सो विल यू नॉट डू द प्रोजेक्ट बिकॉज योर डेडलाइन टू बिकॉज द टाइम टेकन टू गेट योर परमिट इज 1 मंथ? उतना तुम टाइम लगाओगे कि कुछ तो करके यू विल ट्राई टू गेट दैट परमिट विद इन 3-4 days एंड देन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट? तो क्या करोगे? दैट इज बेसिकली द थिंग। So will you be willing subtly to bribe someone in order to get your work done on time? Again, 3 is a good example of that. तो अभी तक अगर देखेंगे तो 3 has the मतलब best bribing undertones that exist here among the first 3 options. 4 देखते हैं। A question that intrigued Rakesh was, should a pack of dacoits share their loot with one of their gang who had killed a bystander against their motto, "Thou shalt not kill"? तो मोटो क्या है कि भाई हम लूटेंगे चलेगा, बट हम किसी को मारेंगे नहीं। एंड ए पैक ऑफ डेकॉइट्स है जिन्होंने मतलब कुछ तो एक चीज लूटी थी, बट वन ऑफ देयर गैंग मेंबर्स किल्ड अ बाईस्टैंडर, राइट? अब किसी ने तो मारा, तुम्हारे गैंग का प्रिंसिपल है दैट यू विल नॉट किल एनीवन, बट दिस पर्सन वेंट अहेड एंड किल्ड सम अदर पर्सन। अब तुम उसके साथ अपने स्पॉइल्स शेयर करोगे कि नहीं करोगे? दैट इज बेसिकली द पॉइंट। अब दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, राइट? और प्रिंसिपल एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, इट्स नॉट अबाउट ब्राइबिंग समवन। हम किसको ब्राइब कर रहे हैं? अगर बोलते कि नहीं मतलब वुड यू ब्राइब द policemen, or would you bribe the local officials, or would you bribe some other bystander, तो that would have been a different story. But यहाँ पे it's a matter of तुम्हारा जो भी pack principle in a way, right? Whatever you have decided for your group, are you following it or not? That is what we are looking at. इसमें bribing undertones कुछ ज्यादा है नहीं, nobody is bribing anyone here. In fact, EMIs तुम्हारे मैनेज कैसे हो रहे हैं, तो I might have an angle कि अच्छा तुम्हारा ब्राइब से कुछ लेना देना है क्या? 2 के अंदर तुम डेडलाइन कैसे मीट कर रहे हो विदाउट कॉपरेशन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, वहां पे ब्राइबिंग अंडरटोन्स है। 4 इज समथिंग जिसमें ब्राइबिंग अंडरटोन्स बिल्कुल भी नहीं है, right? So that's why 4 should be my worst option and 3 should be my best option. So 3 dash dash 4 आना चाहिए ideally. If you look at the options, this is the one that I'm looking at. एक बार फिर से देख लेते हैं, it should be fine here, right? So 3 1 2 4, 3 is of course the first one. 15 दिन का डेडलाइन है, 1 महीना लगता है लाइसेंस मिलने में, परमिट मिलने में, व्हाट विल यू डू? First option is, the first statement that we are looking at here is, how can you manage EMIs with your current income? Are you taking bribes? 2, वन इंटरव्यूअर वाज कॉन्स्टेंटली प्रोबिंग, तुम इतना जल्दी काम कैसे कर लेते हो भले ही तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स इतने अच्छे से काम नहीं करते? आर यू ब्राइबिंग समवन एल्स टू गेट इट डन, और आर यू डूइंग अ शॉर्टी जॉब? तुम कर क्या रहे हो एग्जैक्टली, ये बताओ करके। बहुत ज्यादा ब्राइबिंग अंडरटोन नहीं है, बिकॉज व्हाट विल हैपन इन दिस केस, यार मतलब सबऑर्डिनेट्स को ब्राइब थोड़ी करोगे कि तुम काम कर लो करके। अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो यू आर गिविंग देम सम मनी टू मेक श्योर दैट दे आर वर्किंग हार्डर, तो वैसे करके तुम काम कर रहे हो क्या? बट देन दैट इज नॉट, technically this is not the bribing that we're talking about here. We're talking about bribing up or bribing someone up the order, या तो lobbying कर लो और अपने लिए प्रोजेक्ट लेके आ जाओ, या फिर मतलब do something that helps you in get those permits in a faster manner, जो भी है, right? But little corporation में subordinate bribe को बहुत ज्यादा मतलब it's not exactly a very heavy duty bribing undertone वाला loaded statement that we have. And 4 of course has got nothing to do with bribing, अगर देखते हो तो 3 1 2 4 gradually the intensity is decreasing, that's why descending order होगा यहाँ। Now let's look at the next set that we have, next caselet that we have. So the correct answer of course is option E. Next case देख लेते हैं. So I'll show you the case again. Have a look at it, solve all 3 questions, and then have a look at the solution that will follow. This is the parent information that we have for the entire set. This is the first question. Jagdeep has decided to open a branch in Ramnagar. Which of the following facts will best support his decision? The second question is this: Jagdeep wishes to open a 100% eggless branch in Ramnagar, and some feasibility के लिए कुछ fact finding mission हुआ है. The next question is this one. This is the last question. From a newspaper, Jagdeep has learned that Americans use their own ovens to bake ready to bake products. ये सब दिया हुआ. ठीक है? So let's look at the questions. Let's look at the solutions to these particular bits. So let's see.
टू इंडस्ट्रियल टाउन्स, जयनगर एंड रामनगर. सो जयनगर रामनगर दो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, 15 kilometers apart. So again, this is kind of important. 15 kilometers apart, these towns exist, are similar in land area, population, ethnic diversity and per capita. So very important part. Generally लोग पढ़ते नहीं है, but अच्छे से पढ़ लेना. लैंड एरिया, पॉपुलेशन, एथनिक डाइवर्सिटी एंड पर कैपिटाइल, तो दोनों जगह पे ना काफी सिमिलर है. So अगर let's say for example someone is telling you that 70% of the people are in that age group of 20 to 40 in Jayanagar, 70% of the people will be in the age group of 20 to 40 more or less in Ramnagar as well. Similarly अगर देखोगे तो यहाँ पे population अगर 1.5 lakhs है तो वहां पे population भी 1.5 lakhs ही बोल सकते हैं है करके. इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम्स यहाँ पे जो परचेसिंग पावर है वही परचेसिंग पावर वहां पे भी है. सो दे आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ मेनी एस्पेक्ट्स, राइट. तो ये हम लोग बोल रहे हैं. Jagdeep owns a bakery named Labagate in Jayanagar. He specializes in croissant, masala bread, and whole wheat bread. Eggless cakes are also a favorite. Eggless cakes are also a favorite. बोला. Among the four bakeries in Jayanagar, Jagdeep's bakery with a market share of 30%, तो 30% का market share है, is second only to the oldest La Croissant bakery, whose market share is 40%. So इसका 40% है, इसका 30% है. La Croissant commands a loyal customer base and does not offer eggless varieties. तो eggless varieties बिल्कुल नहीं मिलते वहां पे. That's what has been mentioned here. तो क्या क्या बताया क्या है. जयनगर रामनगर are very similar. One. Second thing, he sells some stuff. थर्ड थिंग, 30% मार्केट शेयर है, सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर है वहां पे. एंड जो फर्स्ट हाईएस्ट जो बेकरी सेल करता है लेक्रोइसा, दोज पीपल डू नॉट ऑफर एनी एगलेस वैरायटीज. तो उनके सारे एग वैरायटीज हैं, राइट. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट. सो लेट्स सी. Jagdeep has decided to open a branch in Ramnagar. तो which of the following facts about Ramnagar will best support his decision? ठीक है. So कौन से facts about Ramnagar will support his decision? देखते हैं. A. 3% of Labagate's current revenue comes from Ramnagar. अब 3% revenue comes from Ramnagar. 3% might sound to be a small thing, but you have to understand that दोनों towns के बीच में 15 किलोमीटर का difference है. So people are willing to come from there to here. 3% लोग उतना मेहनत करके यहाँ पे आ रहे हैं to buy something from Jayanagar, right? So Jagdeep has decided to open a branch in Ramnagar might have some merit because 3% तुम्हारा मतलब लोग travel करके आ रहे हैं, right? So if you are there, then the demand might be even higher. So yes, वहां पे रामनगर में branch open कर सकते हैं. तो one seems fine. Second, Jagdeep has managed to acquire a big space in Ramnagar at a nominal rent. अब तुमका रेंट का पड़ा पड़ा तुमने बड़ा स्पेस ले लिया, doesn't mean that you open a bakery there ना. बेकरी का क्या उधर मतलब रेलेवेंस है या क्या कॉन्टेक्स्ट है वो देखना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज योर बिग स्पेस डज नॉट मीन दैट अ बेकरी विल वर्क. द अ क्लोथ शॉप माइट वर्क बेटर, सो जगदीप माइट डिसाइड टू डू दैट एज वेल. तो बेकरी खोलना इज नॉट रियली द पॉइंट इफ यू हैव अ बिग स्पेस एट नॉमिनल रेंट दैट यू आर गेटिंग. See, before starting his own bakery, Jagdeep was supplying bread to most bakeries in Ramnagar. अब this also is a nice option अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो. Before starting his own bakery, Jagdeep was supplying bread to most bakeries in Ramnagar. अब वो bread supply कर रहा था बहुत सारे bakeries को रामनगर. Why doesn't he continue with the same arrangement now? Right? जगदीप को अगर रामनगर में जाके ब्रेड बेचना है जो भी करना है, and he already has a way to do that. Why should he open another branch? Right? If he is supplying bread to most bakeries in Ramnagar, he can continue to do that. ठीक है. Maybe he might want to bundle it into an offering. तो already उसका supply chain exist करता है रामनगर तक जाने के लिए. So why not build on that and maybe increase his portfolio, start delivering other stuff as well through this supply chain. अगर सप्लाई चेन एग्जिस्ट करता है तो मैं नया ब्रांच क्यों खोलूंगा. दैट इज माय पॉइंट. ठीक है. अगर मेरा सप्लाई चेन बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर मी टू गो फ्रॉम हियर टू देयर, देन मे बी आई विल क्रिएट अ ब्रांच देयर. बट अभी तो मतलब ही इज ऑलरेडी सप्लाइंग ब्रेड्स टू बेकरीज इन रामनगर. व्हाई नॉट कंटिन्यू विद द सेम अरेंजमेंट एंड इंक्रीज द रेंज. D. Ramnagar is served by four bakeries, with the two largest bakeries having market shares 55% and 25%. अब 80% मार्केट शेयर ऑलरेडी चला गया है एंड थोड़ा लॉयल्टी भी होगा, तो वो लॉयल्टी ब्रेक करने के लिए जगदीप को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. इतना एफर्ट डालना सेंस बनता है क्या? वेरियस इफ यू लुक एट ऑप्शन फॉर डी, वी डोंट रियली नो द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट की कितना बढ़ेगा क्या होगा, वी डोंट रियली. सो दिस विल नॉट वर्क हियर. ला क्रॉइसास रामनगर ब्रांच स्ट्रगल्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ 10%. अब ला क्रॉइसा का रामनगर ब्रांच जो है, इट इज स्ट्रगलिंग विद अ मार्केट शेयर ऑफ 10%. अब ला क्रॉइसा यहाँ पे 40% कर रहा है, जगदीप इज डूइंग
ला बगेट इज बेसिकली डूइंग 30%, अगर वहां पे तुम्हारा ला क्रोइसा ही 10% कर रहा है, एंड हियर बिकॉज द टू ऑफ यू आर सिमिलर टू ईच अदर, व्हाई विल जगदीप वांट टू ओपन अ ब्रांच इन रामनगर? मे बी रामनगर इज नॉट अ मार्केट जहां पे बेकरी आइटम्स उतने ज्यादा चलते हैं, दे माइट नॉट वांट टू हैव दैट एट ऑल, मे बी दैट्स व्हाई ला क्रोइसा इज नॉट डूइंग वेल. So this could not be my answer. So my answer has to be option A. ऑप्शन ए में ला बैगेट का करंट रेवेन्यू रामनगर से अगर 3% आ रहा है, it makes sense for Jagdeep to have a full-fledged setup there, so that people there can buy it directly instead of traveling 15 kilometers and then buying it from Jayanagar. Let's look at the next question. Jagdeep wishes to open a 100% eggless branch in Ramnagar. तो 100% eggless branch very important. जयनगर के अंदर eggless देने वाला mostly जगदीप ही था, because the number one market leader is not giving eggless varieties. To explore feasibility, he collected the following facts. तो कुछ 5 facts collect किए हैं. We have to find out from the combinations below the descending order of effectiveness. Choose the best that supports Jagdeep's decision. जगदीप का decision क्या है? 100% eggless branch बनाने का. We have to find out descending order of effectiveness. So first order is the most effective reason या the most effective bit that supports Jagdeep's decision of opening a 100% eggless branch. तो कुछ तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि eggless products यहाँ पे बहुत ज्यादा consume होते हैं. That is what I'm trying to say. And then gradually I will go and say कि ठीक है, मतलब कुछ तो eggless product consume होते होंगे, या overall ही मतलब market better होगा तो उसमें eggless products भी आ जाएंगे वैसे. But my first option or the first statement or the first fact has to be the one that tells me that there is a tremendous amount of potential for eggless products in Ramnagar. तो देखते हैं. Eggless products account for 30% of Labagate's sales. अब eggless products account for 30% of Labagate's sales is fine जयनगर में, right? But रामनगर के अंदर 100% eggless branch निकालने का क्या point है? So that is not something that we have to find out. So let's see. ये मतलब questionable है. It is fine. I agree that eggless products is your specialty. Agree. But रामनगर कैसे पता चला मुझे? तो one need not be my first option. टू, एटलीस्ट 20% ऑफ ऑल बेकरी सेल्स इन रामनगर इज फ्रॉम एगलेस प्रोडक्ट्स. अब वहां पे शायद स्पेशलिस्ट लोग होंगे भी नहीं, बट एगलेस प्रोडक्ट 20% सेल तो दे ही रहा है वहां पे. So that is a market share that he can easily capture, or that is basically a captive market that exists, right? So these people might prefer buying it from a 100% eggless branch and so on and so forth. So two is a nice support that we have. Two is a much more impactful reason than one. Three, the eggless varieties of La Baguette contain minute traces of egg. अगर ये करें तो 100% eggless कैसे branch बन गया? So 3 is definitely not going to be my answer. So option B is definitely not there. Option D is also not something that we will do. क्यों करेंगे मतलब? 100% eggless branch में traces of egg होगा तो मतलब problem ही ज्यादा होगा ना. So I don't think I will do that. 4. La Baguette currently makes 3% of its revenue from Ramnagar customers, and all of it comes from eggless products. Now again, this is an impactful thing. 3% रेवेन्यू उसका रामनगर के कस्टमर से आ रहा है, एंड ऑल ऑफ इट कम्स फ्रॉम एगलेस प्रोडक्ट्स. दैट टेल्स मी दैट देयर इज सम डिमांड फॉर एगलेस प्रोडक्ट्स, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 3% जिसके बारे में आई एम सर्टन. सो 4 इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, जस्ट दैट इट इज स्लाइटली लोअर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी कंपेयर टू 2. 2 में मेरे को पता है कि 20% मार्केट शेयर इज एगलेस प्रोडक्ट्स. 4 में आई नो 3% मार्केट शेयर इज एगलेस प्रोडक्ट्स. दैट्स व्हाई 2 इज बेटर देन 4. सो लेट्स सी. ला क्रॉइसास रामनगर ब्रांच स्ट्रगल्स विद अ मार्केट शेयर ऑफ 10%. अब ला क्रॉइसा का एगलेस वैरायटी है कि नहीं है मेरे को कुछ भी नहीं पता. इट इज स्ट्रगलिंग विद अ मार्केट शेयर ऑफ 10%. आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? सो इसका मेरे डिसीजन में कोई इंपैक्ट नहीं. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ला बगेट. इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट 100% एगलेस वाला पार्ट. कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं वहां पे. तो 5 मेरे कंसिडरेशन सेट में नहीं होना चाहिए. सो आई एम सेइंग दैट 2 इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ऑप्शन, फॉलोड बाय 4, एंड 1 इज ऑल्सो फाइन, मतलब मेरा स्पेशलिटी भी है. So 2, 4, 1 should be the correct order. Option C is right. Even if you had gone with the other two options A and E भी अगर देख लेते तो you would have figured out that 2 is a much better option than 5 to start with this particular chain of events. So the correct answer here is option C. Now let's look at the last question. So यहाँ पे from a newspaper, जगदीप has learned some interesting facts. ठीक है, तो क्या समझ लिया जगदीप ने? That Americans जो होते हैं they use their own ovens to bake ready to bake products. So Americans are using their ovens to bake ready to bake products sold by some bakeries. This idea is apparently very important, right? Apparently मतलब it's not ascertain कि यही हो रहा है करके. तो apparently मतलब ऐसे लग रहा है कि ये आइडिया इंडियन मेट्रोस में भी कैचअप कर रहा है. Jagdeep wants to try this out in his bakery.
ही हैज गैदर द फॉलोइंग फैक्ट्स। अब कुछ फैक्ट्स हैं, 5 फैक्ट्स हैं हमारे पास। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस में हमको ये फैक्ट्स को सीक्वेंस में डालना है। टू सपोर्ट जगदीप, सपोर्ट जगदीप मतलब क्या, ही वांट्स टू ट्राई आउट हिज बेकरी, ट्राई दिस आउट इन हिज बेकरी, तो उसको ट्राई आउट करना है, रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स बेचना है उसको। तो कौन से वाले जो हैं वो सबसे ज्यादा उसको कन्विंस करेंगे कि नहीं तुमको तो बेचना ही चाहिए इन दिस बेकरी, एंड कौन से वाले हैं जो उसको बहुत ज्यादा कन्विंस शायद नहीं करेंगे। So let's see what happens. US bakeries that also sell ready-to-bake products earned higher revenues compared to those that do not. अब यूएस बेकरीज अमेरिका में कर रहे थे अग्री, एंड पीपल आर रेडी टू लुक एट रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स एंड बेक देम इन देयर हाउसेस, ये अपेरेंटली कैचअप हो रहा है। ठीक है, सो अगर अपेरेंटली कैचअप हो रहा है एंड यूएस का कॉन्टेक्स्ट अगर मुझे दिया हुआ है, इट मे और मे नॉट वर्क इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो वन जो है ना वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, मतलब यूएस में जो कोई भी चीज चले डजंट मीन दैट इंडिया में भी वही चीज वैसे ही चलेगी फिर। ठीक है, एंड हायर रेवेन्यूज कंपेयर टू दोस दैट डू नॉट, हायर रेवेन्यूज तो मिल रहे हैं बट देयर माइट बी सम कॉस्ट्स एसोसिएटेड एज वेल, कि भाई मेरे को ये रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स को लाना पड़ेगा, इन्वेंटरी मैनेज करना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टोर देम, देयर माइट बी अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट दैट गेट्स थ्रोन अवे बिकॉज इट इज नॉट सोल्ड बाय बिफोर कंजम्पशन, राइट, मतलब बेस्ट बिफोर वाले डेट के पहले वो सेल नहीं हो रहे। सो मे बी दोज आर द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व, बट येस इट गिव्स मी सम कॉन्फिडेंस। चलो यूएस के बेकरीज ने जो किया था वो लोग के रेवेन्यू हाई हो गए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, तो एकदम ऐसे 5% कॉन्फिडेंस मेरे को आता है, बट इट्स नॉट अर्थ शैटरिंग थिंग नहीं है, ये तो सुन के मैं 100% ट्राई करूंगा, इज नॉट द ऑप्शन दैट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अराउंड 7% ऑफ जगदीप्स रेगुलर कस्टमर्स ओन बेकिंग ovens इन देयर होम्स। अब 7% ओन मतलब आज की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। So today we know that Jagdeep has access to 7% people who might want to try out these products. So आज अगर वो स्टॉक करना चालू कर देगा, right, then these 7% could be the ones who could be convinced to buy these things and try them out. तो 7% का कैप्टिव ऑडियंस हमारे पास आज है, टुडे दिस एग्जिस्ट्स। सो दिस विल एक्साइट मी कि हाँ मेरा 7% क्लाइंटेल तो है जिनके पास ओवेंस है, तो देख लेते हैं, दे वांट टू ट्राई लेट देम ट्राई। सो 2 सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन देन 1 अगर देखते हैं तो। Then, if you look at the third option that we have here, we are saying that the sale of baking ovens in India is forecast to increase by 12% per year for the next 3 years. ठीक है, 12% per year से बढ़ेगा for the next 3 years. अब ये फ्यूचर की बात है, अब 12% से बढ़ेगा, एक तो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इट बीइंग अपेरेंटली द इन थिंग, राइट, सो हम लोग अपेरेंटली की बात कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, कि कैचिंग अप इन इंडियन मेट्रोस एज वेल, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट द सेल इज फोरकास्ट टू इंक्रीज बाय 12%, अभी तक बढ़ा नहीं है। तो आज का बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, तो यहाँ पे 2 इज अ मच मोर इम्पैक्टफुल ऑप्शन टू मी देन 3, बट 3 इज ऑल्सो गुड, मतलब मेरे को पता है कि उसमें पोटेंशियल है, बट कल पोटेंशियल है, आज का मुझे नहीं पता, दैट इज द थिंग। 50% of Jagdeep's regular customers are full-time working couples. अब वो है full-time working couples, तो क्या हो गया, full-time working couples need not use their ovens to bake ready-to-bake products, right? छोटा सा इंप्लाई किया गया है, मतलब साइड से थोड़ा सा इंप्लाई किया है कि भाई देखो वो वर्किंग कपल्स हैं तो देख लो करके। वर्किंग कपल्स will mean that they don't really have time, will imply that they don't really have time, will imply that they might prefer ready to eat products, might imply that it might also spill over to their baking needs, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स में ओवन यूज करके बेक करना उतना भी टाइम अगर उनके पास नहीं है, तो दे विल बाय रेडीमेड प्रोडक्ट्स इंस्टेड ना। रेडी टू बेक क्यों खरीदेंगे, फिनिश प्रोडक्ट बेक्ड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। So 50% of regular customers are full-time working couples does not mean that they will go for ready-to-bake products. They might go for baked products completely. तो ये ना छोटा सा एक ऑप्शन है which again is slightly misleading. Some people might say कि अरे 50% are full-time working couples, उनके पास टाइम नहीं होगा तो वो ready to bake लेंगे। No, they will buy baked products. So that is one thing that you might have to be careful about. So four अपना first option नहीं हो सकता, right? In Indian metros, ready to bake products give higher profit margins compared to finished products. हाँ, इंडियन मेट्रो के अंदर रेडी टू बेक प्रोडक्ट्स गिव हायर प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर टू फिनिश प्रोडक्ट्स, मेक्स सम सेंस, तो मे बी दिस इज व्हाट ही विल वांट टू डू। बट माय पॉइंट इज, इफ यू आर सेलिंग ओनली 5 रेडी टू बेक आइटम्स, राइट, ठीक है, और 5 ही बेच रहे हो दिन के अंदर, प्रॉफिट मार्जिन 100% है, बट 5 ही आइटम बेच रहे हो, तो वुड यू वांट टू स्टॉक इट? तो इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एज वेल। प्रॉफिट मार्जिन इज फाइन, आई अग्री, बट आई आल्सो नीड टू हैव वॉल्यूम्स इन प्लेस। तो वॉल्यूम मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा कि भाई ज्यादा वॉल्यूम अगर जा रहा है तो दैट गिव्स मी कॉन्फिडेंस, आई नो दैट आई विल बी प्रॉफिटेबल। बट उसके बाद मेरा आता है कि मेरा मार्जिन कैसे बढ़ता है। Again, volumes are being spoken about in 2 and 3. So I will be more kicked about having a captive audience of 7%, वो मेरे को देखना है। Second thing, I know that forecast उसका बढ़ा हुआ है, ठीक है, that is what we are looking at. So it's similar to how, let's say I am running this channel.
I knew that some of you already knew that I existed and I taught and you were able to understand what I was saying. तो वो पता था, right? तुमको पहले से पता था कि ऐसे कुछ हो रहा है करके. Many people knew me earlier. तो I knew that there was some captive audience who are willing to listen to what I'm going to say. तो वो था. तो that was my first reason to start this channel. My second reason was CAT as a space has tremendous potential, and as people keep on learning and as people keep on getting to know that something like this exists, you might want to sign up and subscribe to 0.99 का चैनल. तो वो मेरे प्राइमरी रीजंस थे. उसके बाद आई एम सेइंग दैट ओके ठीक है, देयर इज अ डिमांड दैट एग्जिस्ट्स एंड देयर माइट बी अ वे टू मोनेटाइज दिस पर्टिकुलर चैनल. तो दैट वाज बेसिकली माय थर्ड थिंग. बट ऑडियंस होना चाहिए ना. अगर मेरे को मोनेटाइजेशन का पोटेंशियल है बट ऑडियंस ही नहीं है, तो फिर व्हाई विल आई स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, राइट? सो 2 एंड 3 आर मच मोर इंपैक्टफुल देन 5 दैट वी हैव हियर. एंड 1 बेसिकली सेज दैट यूएस के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट के चैनल बहुत अच्छा चलते हैं, तो इंडिया के अंदर भी अच्छे चलेंगे. Again, not really a correlation that exists. I know that okay, people are becoming tech savvy. People have better internet connections. People are becoming more kicked about going for an MBA. Agree, but that does not tell me कि यहाँ पे वो successful होगा. So my success will depend on 2, 3 first, right? So 2 and 3 should be my first two options. So यहाँ पे अगर देखेंगे option D ही है हमारे पास. 2, 3, 5, 1, 4. 4 should be the last one because it doesn't matter यार, full time working couple से जो भी है उससे कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा. That's why 4 can be my last option. So these 3 are there. And initial वाला देखेंगे तो 1 से ज्यादा 2 better option है. तो 1 मेरा आंसर नहीं हो सकता यहाँ पे. It's either going to be A or D. A और D भी अगर देख लोगे तो 2, 3 should have been the first couple of ones. 5 does not really give me a lot of confidence. Margins higher हैं but volume कहाँ से है? Volume is being told to me by 12% से अगर baking ovens बढ़ेंगे तो consequently कुछ तो डालेंगे ना उसके अंदर. So that is basically where ready to bake products will also benefit. So the correct answer here is option D, 2, 3, 5, 1, 4. Now, if you like this content, do consider giving us a like for this video. Let me know in case there is something that you need to know in the comment section below. Subscribe to this channel and do check out this crash course that we have launched for the XAT 2025. If you like the offering, please feel free to go ahead and sign up for the program. And if you have any queries pertinent to the program, do let me know in the comment section below.